Good morning and welcome everyone. Welcome to our daily class at 12 noon live on this YouTube channel where we are engaged in discussing all the topics of forensic medicine. Now, we have been going on for good 2+ more months एंड पिछले कुछ 2 महीनों में हमने बहुत सारे फोरेंसिक मेडिसिन के टॉपिक्स डिस्कस करे हैं रेगुलरली लाइव इस यूट्यूब चैनल पे। इस डिस्कशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द लिसनर्स जो इस क्लास को लाइव देखते हैं या फिर इसकी वीडियो बाद में देखते हैं, दे शुड बी प्रिपेयर्ड वेल for addressing all the questions in their examination। और जो हमारा टारगेट एग्जामिनेशन प्राइमरीली है that is NEET PG 2021, but simultaneously we are looking forward to engage all the students जो NEET PG 2022 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो INICET के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वो यंगस्टर्स जो इस समय MBBS के कोर्स में हैं एंड दे नीड टू गिव देयर प्रोफेशनल एग्जाम वेरी वेरी सून। सो बेसिकली इट्स अ टॉपिक, द टॉक ऑफ द टॉपिक इज दैट इट एंगेजेस ऑल द स्टूडेंट्स। सभी के लिए इस एंगेजमेंट में कुछ ना कुछ है एंड फ्रॉम दैट बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग towards solving the MCQ हम सारी ही एक्टिविटीज इस YouTube चैनल पे कवर कर रहे हैं। So in the process we have had plenty of lectures in past 2 months and we have approximately 20 or 21 odd MCQ sessions also. Okay, in the recent past, in last 1 week or so, we have started with discussions of the topics of toxicology. And we have already had 3 lectures on toxicology, and today we are going to have our 4th lecture on toxicology where we are going to discuss organic animal irritants। या आज हम बात करने वाले हैं एनिमल इरिटेंट पॉइजन्स की, जिसमें प्राइमरली हम बात करेंगे स्नेक बाइट्स की। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक प्रॉब्लम which is commonly seen in semi-urban और rural settings commonly, और हमारी कंट्री में अभी भी स्नेक बाइट के काफ़ी सारे केसेस ईयरली रिपोर्ट होते हैं। सो क्या डायनामिक्स रहते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के, उसके ट्रीटमेंट के, व्हाट टू लुक फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट स्नेक बाइट फोरेंसिकली, हाउ टू आइडेंटिफाई मॉर्फोलॉजिकली अ पॉइजनस और अ नॉन पॉइजनस स्नेक। ये सारे फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट है टुवर्ड्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट एंड लेटर ऑन टुवर्ड्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर जो कि इन पेशेंट्स को देखेगा। ओके, गुड। सो फॉर ऑल द लिसनर्स जो आज इस वीडियो को नए सिरे से देखेंगे, माय नेम इज़ डॉक्टर सुमित तेल्लेवार एंड आई एम presenting myself live to you on this YouTube channel. I completed my MD in Forensic Medicine from Delhi University and it's been 15 more plus years since completion of that I've been actively engaged in forensic teaching and पिछले 15, 16, 17 सालों में बहुत ही सौभाग्यपूर्ण जर्नी रही है मेरी, जहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मुझे मेंटरशिप करने का मौका मिला, उन्हें कोच करने का मौका मिला, जिन्होंने वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए और उनके फीडबैक्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने टीचिंग का एक्सपीरियंस डेवलप किया। आज वो एक्सपीरियंस लेकर के मैं आपके सामने हूँ ताकि वो एक्सपीरियंस आपके knowledge gaining के काम आए। Okay, and this is all inside of the context that we want every student in India to be very very well oriented into the topics and subtopics of forensic medicine।
आज के किसी भी कंटेंट को लेकर के या फिर किसी और फोरेंसिक के टॉपिक की अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट टेलीग्राम ऐप. To do this, you need to download Telegram app in your phone, which is a very simple procedure. And then you need to follow this link, which is livedaily.me/neetpg. Once you follow this link, your queries, your suggestions will automatically bounce on the Telegram app and they can be tackled by me. Now, हम ना रोज एक दूसरे से आपस में मिलते हैं फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न. द रीज़न इज दैट all those who are watching this video, you are preparing for the subject of forensic medicine and मैं आपके साथ में उसी सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. And inside of this association, an important factor is the link between you and me, and that link is Unacademy. This YouTube channel has been powered and aided by Unacademy, और Unacademy के पास नीट पीजी के प्रिपरेशन का बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है. दिस इज कॉल्ड एज Unacademy सब्सक्रिप्शन विच कम्स बाय Unacademy प्लस. ओके, Unacademy प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है जहाँ से आप अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है. ऑल द क्लासेस आर लाइव क्लासेस बाय एजुकेटर which can be seen by you sitting in the comforts of your home, because this is a web based application classroom. Okay, सारी क्लासेस लाइव है. अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हो because somehow you were engaged in doing something, although I don't recommend, क्योंकि लाइव क्लास में अटेंशन करना is equal to आप अपनी पर्सनल क्लासरूम में बैठे हो. But still, if you miss it, those live lectures are available to you in downloaded format. And उसको देखने के बाद if there are certain queries which you cannot have asked because you did not have live class, not to worry, because there are live doubt clearing sessions for you in plus section. Every 3 क्लास के बाद में there is a live doubt clearing session जहाँ पर स्टूडेंट अपने ही एजुकेटर के साथ में अपनी क्वेरीज लाइव क्लियर कर सकता है. सो देर इज़ नो वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ आंसर्स टू कम. उसके सिवाय लाइव पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स हैं, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है, सो दैट यू कैन हैव प्रिपरेशन ऑफ ऑल द 19 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एंड thoroughly and comprehensively. And there are multiple of other features also, but then वो फीचर्स जब तक आप देखोगे नहीं तब तक शायद उतना यकीन नहीं होता. सो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास है स्पेशल क्लासेस विच आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ Unacademy and they are absolutely free. These special classes are designed by all the wonderful teachers जो कि Unacademy के प्लेटफॉर्म पे हैं, और ये स्पेशल क्लासेस भी लाइव होती हैं जिनको आप फ्री में एनरोल करके देख सकते हो. आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन दी Unacademy प्लेटफॉर्म. अगर आपके फ़ोन में ऐप है Unacademy का तो आप ऐप पे जा कर के स्पेशल क्लासेस देख सकते हो. वॉट एवर आर दी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस यू कैन एनरोल फॉर देम, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दो स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस आर डिज़ाइंड एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जो कि प्लस में डिलीवर होती हैं. सो यू हैव अ कंप्लीट आइडिया कि Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसा होता है, एंड दैट विल शो यू दैट हाउ दैट सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू कंपेल यू, कमिट यू एंड डिलीवर यू व्हाट गोल इज रिक्वायर्ड. सब्सक्रिप्शन आपको कमिट करता है ताकि आप अपने गोल तक नॉन स्टॉप लंबे समय तक जाइए. टीचर्स विल बी देयर टू मेंटर यू ऑल द टाइम, सो उसमें ना कोई ब्रेकेजेस नहीं आते. एंड दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है इज वाइल बाइंग दिस सब्सक्रिप्शन डू यूज माई रेफरल कोड विच इज DRSUMITLIVE डॉक्टर सुमित लाइव. ये आपको 10% और डिस्काउंट दिलाता है आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर.
ठीक है, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है और आप सब्सक्रिप्शन लेते समय अपने आप को बेनिफिट में पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज टॉक्सिकोलॉजिकल डिस्कशन अराउंड ऑर्गेनिक एनिमल इरिटेंट्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्नेक बाइट्स की। ओके, so let's begin by talking about organic animal irritant poison. Basically, this includes the effects of bites or sting of poisonous snakes and many other insects also. बट जैसा मैंने आपको कहा कि आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है दैट इज ऑन स्नेक बाइट्स. ओके, the envenomation that occurs with these bites and sting that leads to toxic conditions inside the body. Okay, and these toxic conditions although are treatable, but then there are times when fatalities happen, and that is what a doctor is there for, to prevent fatalities in different conditions. Okay, now if we do talk a little bit about snake and snake bites, तो हम क्या देखते हैं, that snakes are basically ectothermic और cold blooded and limbless creatures. वर्टिब्रेट फैमिली के हैं, रेप्टिलियन क्लास के हैं, लाइक लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जो उस क्लास में भी आते हैं. देर आर अबाउट 3000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्नेक, बट उसमें से तकरीबन 400 स्पीशीज ऐसी हैं जो पॉइजनस है. सो कैन यू फिगर आउट द डिफरेंस between the species of non-poisonous versus poisonous? So out of about 3000 which are different species of snake, we only have about 400 of them which are poisonous. Okay, and approximately about 10 to 15,000 bites are reported annually in India. So इंडिया में तकरीबन 10 से 15,000 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं स्नेक बाइट के कारण. सो दिस वर सम एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट्स. फॉरवर्डिंग दोज पॉइंट्स, that it has been reported that most of the developing countries, 80% of the individuals who has suffered snake bite, they primarily consult traditional practitioner. Now this is the area which is have to be very keenly looked upon by all the practicing physicians, कि जनरली स्नेक बाइट जो हैं वो बेसिकली रूरल सेटिंग्स में होती हैं, सेमी अर्बन एरियाज में होती हैं, बिकॉज वहाँ पर स्नेक की हार्बरिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ presence of fields, because of presence of agricultural lands, because of the presence of shrubs, bushes, jungles, जहाँ पर हार्बरिंग easily होती है. Okay, and उन areas में about 80% of the people who have had the bite, they primarily sought traditional practitioners, and more often than not, only if complications develop, that these people do come to advanced medical centers. Okay, so in snake bite treatment, one of the aspects जो आपको यहीं से देख लेना चाहिए is not only about treating the person well जो आपके पास आ रहा है, because most of the time these people are coming to a doctor or a medical setting with advanced complications of snake bite. हमें counseling पे भी ध्यान बढ़ाना है, so that more and more people can come at the earliest time, so that more lives can be saved. Okay, and that's what our second line is saying, that owing to delay, several victims die during the transit to the hospital. Okay, so if we are some people who can increase the awareness amongst the rural populations or semi-urban population about the difference between the traditional way of treatment versus the modern way of allopathic treatment, and we can let them believe that modern way of allopathic treatment will be able to save
more lives, then mortality due to snake bites can be reduced to a large extent. Okay, now let's see classification of snakes. And when we see classification of snakes, we find that there are two basic ways in which we can classify them. They can be classified either as venomous or poisonous snake, or they can be classified as non-venomous or non-poisonous snake. Very simple. और हमारा इंटरेस्ट आज किस चीज़ पे है? हमारा इंटरेस्ट है कि जो वेनमस या पॉइजनस स्नेक होते हैं वो किस तरीके से उनका वेनम एक्सप्रेस होता है, और दूसरा कि वेनमस और नॉन वेनमस पॉइजन स्नेक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई देम. सो ये दो चीज़ें हम पहले देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग some of the families or the species of venomous snakes that are found in India. There are about 52 poisonous species that are seen in our country. Okay, 52 different species, and they are divided into 3 different families. Now ये नाम आपके लिए important है. The first family is Elapidae. Okay, Elapidae. Elapidae family includes common cobra, king cobra and crate. Okay, basically Elapidae is the family which contains those snakes जिनका venom primarily न्यूरोटॉक्सिक होता है. Okay, so these snakes tends to have primarily neurotoxic venom. Then second family is Viperidae. Okay, of course, as the name suggests, they should include all the snakes which are vipers. So they include Russell viper, pit viper, saw-scaled viper, and their venom is hemotoxic. So Viperidae family basically includes all the snakes जिनका venom primarily hemotoxic होता है. And third is Hydrophidae. Okay, so we have Elapidae, Viperidae and Hydrophidae, which are 3 important families in which the poisonous snakes are divided. And Hydrophidae are sea snake. इनका जो venom है that is primarily myotoxic. Okay, so as a learner, what can we understand? We can understand that poisonous snakes in our country can be divided into 3 families depending upon किस तरीके का उनका predominant venom होता है. So all those snakes जिनका venom predominantly neurotoxic होता है, they are classified as Elapidae. These are common cobra, king cobra and crate. Then second is Viperidae, with predominant venom being hemotoxic. The names of the snakes are Russell viper, saw-scaled viper, pit viper, so all the vipers. And the third family is Hydrophidae or sea snakes, जिनका venom predominantly होता है myotoxic. Okay, now in case of a snake bite, कैसे हम ये पहचान सकते हैं by the morphological appearance of the snake whether the snake is poisonous or non-poisonous? Okay, there are lots of ways to look into the body of the snake to decide whether the snake is poisonous or non-poisonous, but 3 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हमने इस समय हाईलाइट किया है, दैट इज टेल, बॉडी स्केल्स एंड हेड स्केल्स. सो अगर वी लुक एट द टेबल थरली, व्हाट डू वी फाइंड? दैट इन पॉइजनस स्नेक द पॉइजन apparatus is present and that is in the salivary gland.
इन नॉन पॉइजनस स्नेक वो एब्सेंट होगा, वेरा सिंपल सा डिफरेंस है। इन पॉइजनस स्नेक द सलाइवा कंटेन्स टॉक्सिक पेप्टाइड्स एंड एंजाइम, एंड नॉन पॉइजनस स्नेक में ये नहीं मिलेंगे। पॉइजनस स्नेक में क्यों मिलेंगे? बिकॉज as you can see, the poison apparatus itself is present in salivary gland. So whatever poisonous enzymes are to be passed on, they will be passed on to the saliva also. Now the first very basic and very important difference that we see is in the tail. So if you look at the tail of the poisonous snake, the tail is compressed, okay, whereas in non-poisonous snake it is rounded. Then we look at the ventral belly scales. Ventral belly scales in poisonous snakes are broad and they always extend across the entire width of the belly. Whereas in non-poisonous snake, the ventral belly scales are small, they may be moderately large, but they never extend across the belly. Very, very important difference. Third is the back scales. In cases of crate, they are enlarged, and in non-poisonous snake, back पे जो scale होते हैं उसके वो ज़्यादा बड़े नहीं होते. Next important area where lot of emphasis is given, यहाँ से questions भी बहुत सारे आते हैं, are the head scales. Okay. Now in our poisonous snake, head scales are normally small. So अगर स्मॉल हेड स्केल्स दिख रहे हैं तो वो एक पॉइजनस स्नेक का फीचर होता है, whereas a non-poisonous snake tends to have larger head scales. Okay, but then 3 ऐसे पॉइजनस स्नेक हैं जिनके हेड स्केल्स स्मॉल नहीं होते बट फिर भी वो पॉइजनस होते हैं. सो वो पॉइजनस स्नेक जिनकी कंप्रेस्ड टेल होती है, ब्रॉड बेली स्केल्स होते हैं और स्मॉल हेड स्केल्स होते हैं, वो तो होते हैं रसल वाइपर. ओके, सो रसल वाइपर टेंड्स टू हैव अ कंप्रेस्ड टेल, ब्रॉड बेली बेल्स एंड बेली स्केल्स एंड small head scales. Okay, but other 3 categories of poisonous snake, that is cobra, pit viper and crate, they tend to have compressed tail, broad belly scales, but their head scales are large, which are basically features of non-poisonous snakes. But apart from having larger head scales, they have some special feature in their head also. ओके, सो वो अगर हम पहचान ले तो हम लार्जर हेड स्केल होने के बावजूद उस स्नेक को क्वालिफाई कर पाएंगे एज अ पॉइजनस स्नेक. सो ये कौन से 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं? लार्जर हेड स्केल बट प्रेजेंस ऑफ अ पिट बिटवीन आई एंड नोज. दिस इज सीन इन पिट वाइपर. सो पिट वाइपर हैज लार्ज हेड स्केल्स but there is a pit which is present between the eye and the nose of the head of the snake. Then second difference is the head scales are larger and the scales which are above the lips, those are called as the supralabial scale. So अगर आप snake के head scales को देखोगे, so those which are above the oral opening, they are called as supralabial, and those which are below the opening, they are called as infralabial. Okay, so larger head scales but third supralabial. And how do you count them as 1 2 3 from medial to lateral? So अगर हम उसका sagittal section देखें तो scales जो होते हैं वो symmetrical होते हैं दोनों साइड पे snake के. So third supralabial would be 1 2 and 3 somewhere here. Third supralabial will be touching both the nasal opening and the eye shield. So third supralabial scale जो nasal opening और eye shield दोनों को टच कर रहा है, ये फीचर होता है कोबरा का. So कोबरा पॉइजनस स्नेक है जिसके हेड स्केल्स एक्चुअली लार्ज होते हैं, यानी कि हेड स्केल्स का जो फीचर है वो नॉन पॉइजनस स्नेक जैसा है, क्योंकि लार्जर हेड स्केल्स अगर है तो हम कहते हैं कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक है. बट apart from having larger head scale, they have a special features, that is third supralabial scale is touching the eye and the
nasal opening. And third है crate. Crate is also a poisonous snake which tends to have large head scales. But the special feature is that infralabials are 4 in number. So 1, 2, 3 and 4 infralabial scales. Fourth is the largest infralabial scale. If that is the feature, then that snake is crate. Okay. So हमने क्या देखा कि अगर हम स्नेक की टेल, बेली स्केल्स और हेड स्केल्स को ही ठीक से देख लें तो फॉर अ लार्ज एक्सटेंट वी कैन डिफरेंशिएट वेदर इट इज अ पॉइजनस और अ नॉन पॉइजनस स्नेक. सो लेट्स हैव अ लुक. जो चीज मैं भी आपको बता रहा था वो दिखती कैसी है. सो इफ वी से नॉन poisonous snake versus poisonous snake. पहली चीज जो हमको देखनी है, as we said earlier, is the tail. So tail of a poisonous snake is like this. It is compressing when it is ending, whereas tail of a non-poisonous snake is rounded like this. Okay. Then second thing that we need to see is the belly scales. So if you look at the belly of the snake, the belly scales of poisonous snake are broad, so they cover the entire belly breadth. The idea is they are broad and covering the entire belly breadth. So every individual belly scales is broad enough to cover the entire belly breadth like this. So every scale is broad, thus covering the entire belly breadth. Whereas in non-poisonous snake, we see the presence of belly scales like this. So belly scales are not broad enough. They are not covering the entire belly breadth, or there is a possibility that there may be multiple rows of belly scales which collectively covers the entire belly breadth, but it is not a single belly scale which is broad enough covering the entire belly breadth. So either feature, that is a belly scale which is single but does not cover the entire belly breadth, or multiple rows of belly scales covering the entire belly breadth, both are features of non-poisonous snakes. And the third thing is the head scales, as we just saw in our discussion earlier. If the head scales are small, okay, scales on the head are small, they are features of poisonous snake. And if the scales on the head are large, they are features of non-poisonous snake. But there are 3 exceptions where the head scales are large but still the snake is poisonous. But apart from having large head scales, they tend to have some exceptional feature with those head scales, and वो features हमने 3 अभी देखे, which are present in pit viper, cobra and crate. This is how we differentiate morphologically in their appearances. Okay. What are the other differences that can be seen in cases of morphology of poisonous versus non-poisonous snake? If you look at teeth, upper jaw has paired teeth modified into fangs, which are either grooved in cobra or channelized in viper. So cobra के teeth कैसे होते हैं? Groove, उनमें grooving होती है. Grooving is present in the hollow of the fang. And channelized मतलब वाइपर के टीथ में एक तरीके की फैंग के पीछे नाली बनी होती है. ओके, उसको बोलते हैं चैनल. सो द वेनम कम्स थ्रू द चैनल, नॉट इनसाइड थ्रू द ग्रूव विच इज प्रेजेंट in the teeth. Whereas non-poisonous
स्नेक के टीथ यूनिफॉर्म होंगे, उनमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा फॉर अ बिग फैंग. Okay, and there may be 4 longitudinal rows of teeth in the upper jaw and 2 rows in the lower jaw. Fine. Bite marks, poisonous snake का bite mark देखोगे, because of the 2 long fangs the bite marks shall be 2, whereas in cases of non-poisonous snake, because all the teeth will bite collectively, there may be more than 2 impressions present on the skin of the person who has been bitten. And हैबिट, पॉइजनस स्नेक्स की जनरली नॉक्टर्नल हैबिट होती है और नॉन पॉइजनस स्नेक की नॉक्टर्नल हैबिट नहीं होती है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉइजनस एंड अ नॉन पॉइजनस स्नेक. एज आई highlighted earlier, there are questions which come in our examination about the morphology of the poisonous or the non-poisonous snake itself, where tail, belly scales and head scales are the most talked about concepts, and then there could be talk about the teeth impression marks also. Okay, now let's talk about snake venom. As I pointed out earlier, snake venom is the poisonous secretion from the body of the snake. It is basically ejected from a modified poisonous gland, which is basically modification of the parotid gland of the snake, and it happens during the act of biting. The color of the snake poison is basically clear, and it is an amber colored fluid. जब वो fresh होता है तो clear and amber color का दिखता है, और even if it ड्राइज, यानी कि उसको अगर आप ड्राई कर दो तो उसकी पोटेंसी जो है वो इंटैक्ट रहती है. बट फॉर अ स्नेक पॉइजन टू एक्ट, द स्नेक पॉइजन हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी. इफ देर इज एन इंजेक्शन, यानी कि अगर आप उसे खा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हमारे जीआई के जो एंजाइम्स हैं और एसिड्स हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. सो स्नेक पॉइजन फॉर हैविंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी has to be injected. Okay, this is what we were talking about. Look at how the gland contains the salivary secretions. Okay, ये gland है जो आपको यहाँ दिख रहा है, जहाँ पर snake का poisonous manufacture होता है, and it is secreted through the primary venom duct into the secondary venom duct, which opens into the fang. Okay, and during the act of biting, the secretion are sent out by compressor muscles which compress the gland, and the secretion comes through the primary venom duct and into the secondary venom duct, which is then opening into the either into the groove or the channel behind the fang, and thus the venom which is poured in from the secondary venom duct into the venom canal comes out through the groove opening of the fang, and जब fang से pierce करता है snake into the skin, this venom is released subdermally or subcutaneously, and then this this venom starts to produce its effect. And on the second slide you can see the picture where snake venom can be seen pouring out from the 2 fangs that are shown. This is how the mechanics work. So जो fangs हैं वो basically body को pierce करने के लिए हैं, ताकि स्किन के बैरियर को पियर्स करके जो स्नेक वेनम है वो इंट्राडर्मली चला जाए, एंड देन इट कैन हैव इट्स इफेक्ट. नाउ किस तरीके का इफेक्ट होगा वो हमने पहले ही बात करी. दैट डिपेंड्स अपॉन किस तरीके का वेनम है स्नेक के अंदर, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट different snake tends to have different kind of toxins, different kind of enzymes, different compositions of toxalbumins,
और ये सारी चीज़ें उनकी अलग अलग प्रपोर्शंस में होती हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन प्रिडोमिनेंस किस तरीके के वेनम का है वी कैन क्वालिफाई दीज snakes into three kind of venoms containing snakes, that is neurotoxic, hemotoxic and myotoxic. So let's see one by one ये venoms किस तरीके के होते हैं, इनका क्या principal action होता है. So talking about neurotoxic venom, which is basically the quality of ELA PDA family. The origin is in ELA PDA snakes like crate and cobra. The actions are like curare. Okay, neuromuscular blockade. Actions क्या होते हैं? Neuromuscular blockade, इसीलिए neurotoxic venom बोलते हैं इसको. Mainly on the motor nerve cells and results in muscular paralysis. ठीक है. The muscles are affected in the following order. Primarily are the affected muscles which are muscles of mouth, then comes muscles of throat and then muscles of respiration. ठीक है, माउथ, थ्रोट एंड रेस्पिरेशन, इस तरीके से मसल का अफेक्ट होता है न्यूरोटॉक्सिक बाइट में. सो बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक बाइट में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, द पेशेंट विल प्रेजेंट विद रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, उसे दिक्कत होगी सांस लेने में बिकॉज ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस, नेक एंड रेस्पिरेटरी इंटरकॉस्टल मसल्स गेटिंग इफेक्टेड बाय द न्यूरोटॉक्सिन. ओके, द सिम्टम्स, बाइट साइड पे क्या सिम्टम्स होने वाले हैं इस केस में, ये तो उसके जनरल बॉडी सिम्टम्स है. जहां पर बाइट हुआ है वहां पर क्या दिखेगा, लोकल मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि प्राइमरली इनका टॉक्सिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है. कई बारी सिवियर बर्निंग हो सकती है एट द बाइट साइट. ठीक है, एंड देयर कुड बी सम इडीमा एंड इन्फ्लामेटरी चेंजेस दैट कुड बी सीन. ओके, on the other hand, if you look at the hemotoxic venom that is basically present in the viper family, that is Viperidae snakes, Russell viper, saw-scaled viper, pit viper. Okay, these hemotoxic venom, they act by cytolysis of endothelium of the blood vessel. So basically इनका local effect बहुत ज़्यादा होगा, which you can see in this picture. This is a foot or lower limb of a person who has had a hemotoxic snake bite. Look at the gangrenous picture it has created. Look at the cellulitis, the amount of damage it has caused externally to that limb. This is all because of cytolysis of the endothelium of the vascular walls there. So there is going to be lysis of red cells and the other tissue cells and the coagulation disorders. All of this can lead to severe swelling, oozing of lot of blood from the local area and spreading of cellulitis at the bite site. Blood from such patients, it fails to clot even on adding thrombin because it tends to have very low लेवल ऑफ फिब्रिन. ठीक है, तो हमने क्या देखा था, न्यूरोटॉक्सिक बाइट में जनरली जो फीचर्स है वो सेंट्रल फीचर्स है, फीचर्स ऑफ मस्कुलर पैरालिसिस. एंड हीमोटॉक्सिक बाइट में जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा पेरिफेरल फीचर्स हैं. द लोकल डैमेज, लोकल इन्फ्लेमेशन, लोकल लॉस ऑफ वेस्कुलैरिटी इज मोर इन केसेस ऑफ हीमोटॉक्सिक बाइट. तो लोकल मैनिफेस्टेशंस हीमोटॉक्सिक में ज़्यादा है, सेंट्रल मैनिफेस्टेशंस न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में ज़्यादा है. ओके, एंड फर्दर मूविंग ऑन टू द हीमोटॉक्सिक बाइट, वी सी दैट लोकल एक्शंस में क्या क्या होने वाला है, सिवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, एक्यूमोसिस होगा, सिवियर हेमरेज हो सकती है, नेक्रोसिस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स में बी सीन, functional disturbances
like convulsions due to intracerebral hemorrhages may also be seen, but then they are less predominant as compared to the local effects that are seen with hemotoxic venom. Okay, how about myotoxic venom? Sea snake hydrophidiae. Action, it produces generalized muscular pain. Okay, so myotoxic sea snake bite में क्या होता है? Generalized muscular pain होता है, which is followed by myoglobinuria, which may be seen in 3 to 5 hours. Okay, which may be seen by myoglobinuria, seen in 3 to 5 hours. Death may happen due to respiratory failure. Local action is minimal swelling with pain may be present. Okay, because sea snakes are myotoxic, their main action is muscular destruction. इसीलिए myoglobin release होगा, which may be seen as myoglobinemia and myoglobinuria. Okay, so 3 different type के snake, 3 different type के venom और 3 different type की presentation. Neurotoxic more central presentation, hemotoxic more peripheral presentation. Myotoxic sea snake bite presents with clinical signs of myoglobinuria, which can be detected on laboratory examination. Okay, तो अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई आता है पेशेंट स्नेक बाइट का, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. Okay, to understand the basic principles of treatment, remember, right. What is right? The first thing is reassure the patient. Okay, reassure the patient means you need to allay the anxiety and the fear. This is reassuring. Now, what do you need to tell the patient to reassure the patient? See, there are few very straightforward scientific things that you need to tell the patient, because they are layman people, they may not know a lot of things. One, high probability that he has been bitten by a non-poisonous snake. Why? Because most of the species are actually non-poisonous. Two, even if he has been bitten by a poisonous snake, the chances of the snake being armed with the poison are very, very less, because the snake may have been resting and the person may have just entered his habitat and the snake may have reacted immediately. So the snake, the poisonous gland of the snake may have been concentrated with poison. The chances are very, very less. And third, that even if it is a poisonous snake and probably he would have been loaded with poison, the chances that he would have had a very deep bite, because of which the poison is going to impact the person severely, are again very low. So you need to reassure the patient that things would be taken care of. He doesn't need to panic, and the person is there, that is you who are along with him, who is going to take care that he is taken to the facility of medical treatment as early as possible, so that he has to be calm around it. Okay, now reassurance is very, very important thing, because it's a very, very dreadful scenario for a patient to be in. A lot of patients, in spite of the fact that they may not have had a poisonous snake bite, still die because of the neurogenic shock, because of the fear that they have. So reassurance से क्या होता है, आप उसकी एंजाइटी और उसके फियर को कम करते हो, so that his body response is averagely normal. ठीक है. दूसरी चीज आपको क्या करनी है, राइट में immobilization. Okay, so R for reassurance and then I for immobilization. So
why there is immobilization? Because you need to prevent the spread of venom. There are some classical ways of doing it, old orthodox way, like cutting the area and sucking the blood out, or spitting after sucking the blood out. These kind of things should not be tried, because you are wasting valuable time, because even you don't know whether it is a poisonous or a non-poisonous bite for sure. So rather than wasting the valuable time, the best thing to do is to immobilize the limb on which the bite has happened. If you can, splint the limb with anything that you can use for splinting, एक डंडी, कोई लकड़ी, उससे पाँव बांध दिया, so that limb is going to be straight all the time, and then lift the person, put the person in whatever conveyance you have with you, and take the person to the hospital as soon as possible. Don't try and do fancy things without knowing what kind of snake has bitten the person. So the best thing is immobilize the limb, immobilize the person, take him to the hospital as soon as possible. And that is the next 3 words of right, that is GHT, which is go to the hospital. Okay, that is GH, go to the hospital, and T is tell the doctor everything. हॉस्पिटल लेके जाइए और डॉक्टर को जाकर के जो भी है बता दीजिए. सो राइट इज R फॉर रीअश्योरेंस, I फॉर immobilization, GH is go to hospital, and T is tell the doctor whatever you have witnessed or whatever you know, because that information is going to help doctor a lot in treatment of the patient of snake bite. Now these doctors, what are when the patient comes to a central facility, that is medical facility में आ गया है, तो उस पेशेंट के साथ में एज अ ट्रीटमेंट आपको क्या करना है? You need to give anti-venom, and this anti-venom has to be given only if it is a case of poisonous snake bite. Okay, if clinically examine करके आपको ऐसा दिख रहा है that it is a case of non-poisonous bite, because लोकल साइंस बाइट में कोई खास नहीं है. लोकल साइंस को, लोकल एरिया को जब आप देख रहे हो, rather than having 2 fang marks, there are multiple teeth marks present. There is a local swelling, but there is no central deficiency. The person is not complaining of any respiratory insufficiency. There is no local cellulitis which is developing. There is no active bleeding at the local site. So it doesn't look to be a case of either a hemotoxic or a neurotoxic bite. At that point of time, just reassure the patient, let the patient be admitted in your observation for 24 hours. Okay, very very important information. So even in non-poisonous bite, keep patient in observation for 24 hours. The reason for this is, as we said earlier, in spite of having a non-poisonous bite, lot of people still die because of the neurogenic shock of the fear of the snake bite. So if you keep them under observation, gradually you allay their anxiety and fear, and they are good to go once that fear has gone. Okay, but if on clinical examination, once the patient presents, you find that it looks to be a case of poisonous snake bite, you need to give anti-venom therapy, and that is polyvalent anti-snake venom. Polyvalent इसीलिए क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन से स्नेक ने काटा है, whether it is cobra, whether it is Russell viper, whether it is crate, or whether it is saw-scaled viper, जो कि 4 कॉमन स्नेक्स देखे जाते हैं. इसीलिए
पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम प्रिपेयर किया जाता है विच हैज एंटीबॉडीज अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर एंड क्रेट. And then this anti-snake venom is given after testing, and that takes care of the neutralization of the snake venom. Okay, and if we want to go for lab diagnosis, because if you are concerned whether it looks to be a snake or a non-snake bite, what are the specific, ज़्यादातर हमारे यहाँ तो clinical observation पे ही काम हो जाता है, but still if you want to go for lab diagnosis, then snake specific venom antigens can be detected from wound swabs, from aspirates, biopsies of the wound area, or from serum or CSF or urine. So ये सारे ही सैंपल की तरह काम कर सकते हैं. रेडियो इम्यूनोएसे is the most specific test for detecting these antigens. एंजाइम इम्यूनोएसे भी काम कर सकता है. Okay, and cholinesterase and thromboplastin can be differentiated by radioimmunoassay. तो depending upon snake में basic cholinesterase है, so neurotoxic snake है, because neurotoxic snake में neurotoxic क्या कहते हैं, neurotoxicity होगी, so it will contain large amount of cholinesterase. and hemotoxic snake होगा तो thromboplastin activity रहेगी for bleeding. ओके, सो रेडियो इम्यूनोएसे में ये दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं. दैट इज वाई रेडियो इम्यूनोएसे इज मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर डायग्नोजिंग व्हाट काइंड ऑफ वेनम हैज बीन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द विक्टिम. और इसके सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं? वुंड स्वैब हो सकता है, वुंड एस्पिरेट्स हो सकते हैं, बायोप्सी हो सकती है वुंड एरिया की, सीरम, CSF एंड यूरिन. यहाँ हर जगह से स्नेक एंटीजेंस मिलने की संभावना है. एंटीवेनम ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा, पॉलीवेलेंट एंटीवेनम ट्रीटमेंट दी जाती है. 20 ml जो प्रिपेयर्ड है आफ्टर डिजॉल्विंग फ्रेशली पाउडर्ड सीरम इन डिस्टिल वाटर, हाफ जो है उसको इनिशियल डोज की तरह देते हैं, एंड देन एवरी 2 आवर्स के इंटरवल पे देते रहते हैं इफ नेसेसरी. ओके, before injecting the dose of the serum, it should be tested for sensitivity to the patient, because polyvalent anti-snake venom जो है वो horse serum से बनता है, so it in itself carries a danger of hypersensitivity reaction. तो टेस्टिंग करना ज़रूरी है. ओके, ड्रेस दी वेनिपेंचर साइट्स विद अ प्रेशर बैंडेज. जहाँ पर आपने दिया है उसको प्रेशर बैंडेज से ज़रूर ड्रेस कीजिए. इंजेक्शन ऑफ द एंटीवेनम इनटू द फैंग मार्क्स इज प्रोबेबली नॉट सो इफेक्टिव एंड बिकम्स पेनफुल ऑल्सो. ओके, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर लोकल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, वहाँ पर दर्द हो रहा है पेशेंट को. सो यू आर गोइंग टू इंजेक्ट सम antivenom locally also to neutralize the local presence of snake venom is not advisable, because it intensify the symptoms of the patient. And children have to be given the same dose as it is for adult. Okay, now in cases there is a death which results फ्रॉम स्नेक बाइट, पोस्टमार्टम में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है आइडेंटिफाई करने के लिए? सबसे पहले है बाइट मार्क. दिस बाइट मार्क इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन एक्सट्रीमिटीज, बिकॉज कॉमनली स्नेक लोअर लिम्ब पे अटैक करता है जनरली. So most common area should be somewhere in the lower limb, otherwise it could be hands also. So commonly extremities पे आपने देखनी है. These bite marks are 2 in number, which vary from 1 centimeter to 2.5 centimeter in depth. Okay, at the bite site there may be edema, cellulitis, bleeding. Okay, that depends upon किस तरीके की बाइट है. अगर हीमोटॉक्सिक बाइट है तो ब्लीडिंग और सेलुलाइटिस ज़्यादा होगी. न्यूरोटॉक्सिक बाइट है तो इडीमा विद पेन होगा, बट ब्लीडिंग या सेलुलाइटिस की पिक्चर दिखाई नहीं देगी.
Okay, internal examination में we need to look for hemorrhages in lung, pleura and pericardium. किडनी में renal tubular necrosis दिख सकती है. Okay, urine and urinary bladder may show the presence of hemoglobin and albumin in these cases. Okay, but the most important finding is the external finding जो हमारे को पेरिफेरी में दिखने वाली है. Those two fang marks that may be seen on the body of the victim. Okay, in cases of cobra bite कुछ इडीमा होगा, एक्कीमोसिस होगा, बट नेक्रोसिस या गैंग्रीन नहीं मिलेगा बिकॉज वो हीमोटॉक्सिक स्नेक का साइन होता है. ओके, एंड कोबरा के केसेस में एक और इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, दैट मे बी फ्रॉथी डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी इट कॉजेस. क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक वेनम है तो फ्रॉथी डिस्चार्ज मिल सकता है कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ. एंड सिमिलरली इन केसेस ऑफ दीज न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट लाइक कोबरा, pulmonary edema will be a very important finding in cases of autopsy. Because of respiratory insufficiency, the lungs will contain lot of water because of the respiratory failure that they suffer. Okay, this is what we are talking about. Look at two fang marks present alongside and उसके सिवाय कोई और मल्टीपल टीथ बाइट मार्क नहीं है. दिस काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन goes in favor of the bite being poisonous in nature, and this picture shows you a real time picture of two bite marks present on the hand bitten by probably a poisonous snake. Okay, so that takes care of some idea around the irritant organic animal poison, जिसमें आज हमने snake bites की बात करी. I want to re-summarize कि आज की बात के लिए हमारा important remembering points कौन से हैं. You need to remember the families, और किस family में किस तरीके के poison मिलते हैं, Elapidae, Viperidae, Hydrophidae. Okay, then you need to remember the difference, morphological difference between poisonous and non-poisonous snake, जहाँ पर head, belly and tail के features are very very important. Okay, then you need to remember the different kind of venoms these snakes have: neurotoxic, hemotoxic and myotoxic venoms. And of course we need to remember the principles of treatment, that is RIGHT: reassure, immobilize, go to hospital and tell the doctor. And then once the person has reached the hospital facility, how the treatment begins or progresses, it depends upon the clinical signs and the laboratory presentation of the patient. If it seems to be a non-poisonous bite on clinical signs, still keep the patient under observation. Don't send him home. Many of these patients who are promptly sent home still die because of neurogenic shock, because उनका fear आपने दूर नहीं किया. So you need to prevent those deaths also. And then once you have kept the person under observation and he seems to be all right, send the patient back, that he's not going to die anymore. But if the clinical signs tell that it looks to be a poisonous bite, the treatment is polyvalent anti-snake venom. ठीक है, you can catch me at Telegram app to share any query that you may have, or if you have any concerns or if you have any suggestions also. The link is livedaily.me/neetpg. I have already told you earlier about how Unacademy का plus subscription is probably the most powerful preparatory subscription for NEET PG that you have available right now. Various benefits which are listed on your screen right now, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, but एक benefit जो हमने पहले नहीं देखा was that plus Unacademy tends to have multiple teachers for different subjects. Okay,
So even for a subject of forensic medicine, there are few more teachers who are associated with Unacademy. हर टीचर का अपना एक अलग पढ़ाने का तरीका होता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का अलग तरीका होता है, उनके मैनरिज्म्स, उनकी एक्सप्लेनेटरी पावर, उनकी डिस्क्रिप्शंस, दे आर डिफरेंट. सो अलग टीचर सेम स्टूडेंट पे डिफरेंटली इम्पैक्ट कर सकता है. एंड सिमिलरली फॉर अ स्टूडेंट, he may have to follow different teacher just to understand different topics of a same subject. So basically the teaching in an academy is student centric. Student की choice है वो किसको follow करना चाहता है, which is very very good. You're not bound to follow a single teacher because he is only associated with that institution. Okay, ये चीज भी आप देख सकते हो on special classes. Okay, so if you go to special classes section on Unacademy के ऐप पे या उनकी साइट पे, वहाँ पर आपको दिखेगा different teachers के पढ़ाने के तरीके. You can follow that also. Okay, and I already told you, if you want to be a part of special class because you want to see how does a classroom work, the next available special class is tomorrow itself, that is on 16th of October 6 p.m. where we are going to discuss NEET recall questions in forensic medicine, followed by AIIMS recall question on 19th. So 16th and 19th 6 p.m. is your time to come and witness a special live class by me, and then progress on to taking the NEET PG plus subscription, which is very very simple to take. What you need to do is, step 1, अपने फ़ोन पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए. और अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हो, तो अनअकैडमी की साइट पे जाकर के सिंपली अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए, विच इज़ 1 minute जॉब. बोथ द जॉब्स 1 minute के काम है. Once you have done either of them, then you have to go to manage goal sections in this profile और वहाँ से अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका गोल है नीट पीजी. अगर आपका गोल नीट पीजी नहीं है, आपका गोल आईआईटी है, तो आप आईआईटी जेईई सिलेक्ट कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम. सो ऑल द गोल्स आर मेंशन्ड. once you have selected NEET PG, then simply you have to select plus, because this is what you are taking as subscription. Subscription format is NEET PG plus. और उसके बाद में simply press the tab which says get subscription. सब्सक्रिप्शन लेते समय दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा. जैसे मैंने आपको पहले बोला था, टेक 12 और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. बल्क सब्सक्रिप्शन है, कम कॉस्ट पे आते हैं, लॉट ऑफ सेविंग्स. सेकेंड, सब्सक्रिप्शन लेते समय डू यूज माई रेफरल कोड विच इज DRSUMITLIVE. दिस गेन्स यू अनदर 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट. पेमेंट कैन बी डन इन पार्ट्स, कैन बी डन वाया डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, can be done through EMI options or UPI payment. So lots and lots of payment modules are available. Whatever suits you, the most comfortable way, that can be selected itself. And that's all. You are part of NEET PG preparation through Unacademy Plus section. Now, if you are someone who wants to have a little more, because आप हर corner को cover करना चाहते हो, आपके लिए एक और सब्सक्रिप्शन है विच इज कॉल्ड एज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स हैं, एज यू कैन सी. सो यू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, बैच कोर्सेज हैं, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है और लाइव क्लासेस मिलती हैं. तो आइकॉनिक में वो मिलता है जो प्लस में मिलता है, पर आइकॉनिक में वो भी मिलता है जो प्लस में नहीं मिलता, विच इज प्रेप लैडर का ऐप सब्सक्रिप्शन, वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक 2.0, रैपिड रिवीजन कोर्सेज. यानी कि जब आपके एग्जाम पास आ रहे होंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर रैपिड रिवीजन कोर्सेज आर देयर, दे विल बी अवेलेबल फॉर यू. आप उन कोर्स को भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड हैंड रिटन नोट्स, ताकि वेन एवर यू आर नॉट ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड यू नीड टू गो बैक एंड सी some of the notes which have been specially prepared by the
टीचर इटसेल्फ वो भी आपके सामने रहते हैं with their own kind of diagrams, their own kind of explanation. So all in all, a very very wonderful package, both of them, either a plus course or an iconic course. Iconic course के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है आपको, but then रेफरल कोड वहाँ पर भी वर्क करता है. So you can have 10% discount there also if you use my referral code. याद रखिएगा मेरा रेफरल कोड है DRSUMITLIVE. चलिए आज के लिए इतना करते हैं. कल मिलेंगे नए फ्रेश टॉक्सिकोलॉजिकल टॉपिक के साथ में. तब तक इस चैनल पे बने रहिए. इस चैनल को शेयर करना है आपने विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ट्राई एंड बी लाइव ऑन दिस चैनल. वी कम लाइव टू यू एवरी डे at 12 noon. अगर आप लाइव नहीं भी आ पा रहे हैं, वॉच दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, द लिंक ऑफ दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि आपकी सिटी में हो सकते हैं बट आपसे दूर रहते हैं, आपकी सिटी में नहीं होंगे, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है बट दे आर इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस. ऑल ऑफ देम विल बी बेनिफिटेड बाय दिस डिस्कशन. कल मिलेंगे. तब तक के लिए आपको ये रेफरल कोड याद रखना है विच यू हैव टू शेयर विद anyone and everyone. अगर उनको अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना हो फॉर एनीथिंग, नीट पीजी, नीट यूजी, आईआईटी और एनी अदर सीडीएस एग्जाम, बैंक एग्जाम, ये कोड यूज करके उनको 10% का बेनिफिट हो सकता है. और जब हो सकता है व्हाई नॉट टेक इट. ओके, चलिए कल मिलेंगे 12 बजे with yet another toxicological topic. Till then, bye bye. Take care. Have a lovely day. Have a fruitful day ahead of you and keep safe in these pandemic times. Bye bye.